श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्राणां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरं तया वाप्तविवेत्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौसारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रसहानुजः धृतराष्ट्रो ययोत्सुश्च सुतसारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपि अन्याश्च जामय पाण्डुर्ज्ञातय ससुता स्त्रियः प्रत्युजग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्वम् इवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वङ्गाभिवादनैः मुमुचु प्रेमबाष्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातरा राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं मासीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरधनु युष्मत्पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषान्याग्देर्मोचिता यत्समात्रिकः कया वृत्त्या वर्तितं शरद्भिचितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवता दृष्ट्वा श्रुता वा यदव स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तद् समवर्णयद् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विसहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमा कञ्चित्कालमथाबात्सित सत्कृतो देववत् सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अविभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावद् दधारशूद्रत्वं शापाद्वर्ष शतं यम युधिष्ठिरो लब्धराज्ञो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया स्त्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदि हया अत्यक्रामदविज्ञात काल परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रीत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् करहि चित् प्रभो स एव भगवान् काल सर्वेषां न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमु तान्यैर्धनादिभिः पितृभातृसुहृत्पुत्रा हतास्ति विगतं वय आत्मा च जरं याग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महीयसि जन्तुर्जीविस्तासा यया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डमादत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टुदत्तश्च गरुदाराश्च दूषिता हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरशुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो परेत्यनिच्छतु
जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धन अभिज्ञातगतिर्जह्यात्म स वै धीर उदारितः यस्वं कात्परतु विह जात निर्विद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तम अथोदि दिशं यातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान् इतोर्वाक् प्रायस काल पुंसं गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाषाणदृढिम्नो निश्चक्राम भातृशं दर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत् संप्रहार अजातशत्रुकृतमैत्र्युहुताग्नि निर्विप्रान् नत्वा तिलगु भूमिरुक्मयी गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिं च तत्र सञ्जयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानस गावल्गणि क्व नस्तातु वृद्धो हीनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्धा पितृव्य क्व गतः सुहृत् अपि मय्य कृतप्रज्ञे हतबन्धु स भार्यया अंस आसं समानसमलं गङ्गायां दुःखितो पतत् पितर्युपरति पाण्डु सर्वान् सुहृद शिशून् रक्षतां व्यसनत पितृभ्यो क्व गतावित सुत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सुतो विरह कर्षित आत्मेश्वरमचक्षाणु न प्रत्याहाति पीडित विमृज्या श्रोणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मानं अजातशत्रुं प्रत्युचि प्रभुपादा वनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहवेद व्यवसितं पितृर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहु मूषितोऽस्मि महात्मभिः अथ जगाम भगवान् नारद सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितृर्भगवान् क्व गतावित अम्बा वा हतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारैव पारि भगवान् पारदर्शकः अथा बभासि भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन सुचुराजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकासपाला यस्ये वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावुनसि प्रूता स्तन्त्यां बद्धा स्वदामभिवाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितु यथा क्रियोपस्कराणां संयुगविगमा विह इच्छया क्रीडितु स्यातां तथैवेशिच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि शोच्यास्ति स्नेहादन्यत्र मोहो जह्यङ्गवैक्लव्यमज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणावर्तिरंस्ति च मां विना कालकर्मगुणः दीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्वग्रस्तु यथा परम् अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां फाल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं
तदिदं भगवान् राजन्नेकमात्मात्मनात् स्वकृन्मनां स्वकृद् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुदा सूयमद्य महाराज भगवान् भूतभावन कालरूपोऽवतीर्णुष्याभमभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यमवशिषं प्रतीक्षति तावत् यूयमवीक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वर धृतराष्ट्रसह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवतऋषीणामाश्रमं गत श्रुतुभिः सप्तभिर्या वै स्वार्धूनीं सप्तधा व्यधात् सप्तानां प्रीयते प्रीतये नाना सप्तश्रुत प्रचक्षति स्नात्वानुशवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यथा विधि अभ्याक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनुजितश्वास प्रत्याहृतषडिन्द्रिय हरिभावनया ध्वस्त रजसत्वतमो मलः विज्ञानात्मनि संयुज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोर्दर्को निरुद्धकर्णाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ति स्थाणु रिवाचल तस्यान्तरायुमयि बाभू संन्यस्ताखिलकर्मण स वा अद्यतनाद् परत पञ्चमे हनि कलेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहि पत्न्यो पत्नी सहुटजी बहिः स्थिता पतिं साद्वैतमग्निमनुवीक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशुकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिशीवक इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गं नारद सह तुम्बुरो युधिष्ठिरुवचस्तस्य हृदि कृत्वा जात्सुचः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रुत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णु बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा न यात्ततोऽर्जुन ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रुद्रं विपर्यस्त तु धर्मिण पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्म प्रायं व्यवहृतं साठ्यमिश्रं सुसूरिदं पितृमातृसुहृद्भातृ दम्पतीनां च कल्कनं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यकर्म प्रकृतिं दृष्टुवाचानुजं नृपयुधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गता सप्तधुनामासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेद मञ्जसा अपि देवर्षिणां दृष्ट स कालो यमुपस्थित यदात्मनोऽङ्गमा क्रीडं भगवानुतसि श्रीक्षति यस्मान्न सम्पदो राज्यं दारा प्राण कुलं प्रजा आसन् सपत्नबीजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्युत्पातान्न रव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दारुणान् संसतु दूराद् भयं नु बुद्धिमोहनम् उर्वक्षि बाहवो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः विपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति
ते विप्रियं शिवैषोद्यन्तमादित्यमभिरुत्य नलानन मामङ्गमसारमेयूयमभिरेभिभत्यभिरुवत् सस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यां दक्षिणं पशवो परिवाहांस पुरुष व्याघ्रलक्षैरुदतो मम मृत्युदूत कपोन्तोयामूलोककम्पयन्मनः प्रत्युलुकश्च कुहानैरनिद्रुशून्यमिच्छत धूम्रादिश परिधाय कम्पते भूषहाद्रिवि निर्घातश्च महांस्तात शाकं च स्तनयित्नुवि वायुर्वाति खरस्पर्शुरजसा विसृजं स्तमा अश्रिग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वदा सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि ससंकुलैर्भूत गणैर्ज्वलिते इव रुदसी नद्यो नदाश्च क्षुभितास रांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्स न दुह्यन्ति च मातर रुदन्त्य श्रुमुखा गावो न हृष्यान् नृषभा व्रजे दैवतानि रुदन्ति वा स्विद्यन्ति यो चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानकराश्रमा भ्रष्टश्रियो निरानन्दा किमघं दर्शयन्ति न मन्य एतैर्महोत्पाते नूनं भगवत पदे मनन् अनन्य पुरुष स्त्रीभिर्हीना भूर्हतसु भगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टा हृष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमाद् ब्रह्मन् यदुर्पुर्या कपिध्वज तं पादयोर्निपतितम यथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमब्धेन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयो विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छाय मनुजं नृप पृच्छति स्म सूरिन्मध्ये संस्मरन्नारदैतिरं रिक्तं युधिष्ठिर उवाच कच्चिदान अर्धपुर्यां न स्वजना सुखमा सति मधुभोज दशार्हारः सात्वतान्धकवृष्णय सुरो मातामह कच्चित् स्वस्त्यास्ति बाथमारिच मातुलसानुज कच्चित् कुशल्या नकदुन्दुभि सप्त स्वसारास्तत्पत्न्यो मातुलान्यसात्मजा आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजा गोजीव त्यसत्पुत्रुस्य चानुजरिदिकास सुतो क्रूरु जयन्त गदसारणा आसते कुशलं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु प्रद्युम्न शरवृष्णे नाम सुखमास्ते महारथ गम्भीररयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारु देष्णश्च शाम्भो जाम्बवती सुत अन्ये च कार्ष्णिप्रवरा सपुत्रा ऋषभादया तथैवानुचरा सूरि श्रुतदेवोद्धवादय सुनन्दनन्द शीर्षण्या ये चान्ये सात्वतरसभा अपि स्वस्त्या सते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रया अपि स्मरन्ते कुशलमस्माकं बद्धसुहृदा भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरी सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्भृता मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलाम्बोधा बाध्योऽनन्तसखा पुमान् यदुआहुदण्डा गुप्तायां स्वपुर्यं यदभूर्चिता क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिकाइव यत्पादा शुश्रूषण मुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वेष्टसहस्रयोषित निर्जित्य संख्ये त्रिदशांस्त
दासिषु हरन्ति वज्रायुध वल्लभीं भूषिता यद्बाहुदण्डाभ्यो दयानुजीविनो यदुप्रवीरा यकुतु भयामो अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिरारिदाम्बलात् सवां सुधर्मां सुरसत्तमोचितां कच्चित्तेनामयं तात भ्रष्टति जाविभासि मे अलब्धमानोऽज्ञात किं वा तात चिरोषित कच्चिन्य विहतो भा वै शब्दादिभिरमङ्गले न दत्तमुक्तमर्थेभ्य आशया यत् प्रति श्रुतं कच्चित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं श्रियं शरणोपश्रुतं सत्त्वं नात्याक्षि शरणाप्रद कच्चित् त्वं नागमो गम्यं भासत् कृतं श्रियं पराजितो वाथ भवान् नौत्तमयि नाशमयि पथि अपि श्वेत पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यन् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान् यदक्षमं कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसि तेन्यथा न रुक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। अथ पंचदशोऽध्यायः। सूत उवाच इवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षित शोकेन शुष्यद्वदनारीत्सरुजु हतप्रभा विभुं तमे भानुध्याय न शक्नुत् परिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्यसु च पाणिना मृज्यनेत्रयो परोक्षेण सुसमोन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातर सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिण येन मे परितं तेजो दिव विस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोकोऽप्य प्रियदर्शन उक्थेन रहितो येष मृतकप्रुच्यते यथा यात् संश्रयाद् नृपा ये अमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोरितं खलु मया विहतश्च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषा विगता च कृष्णा यत् सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदा मिन्द्रं च सामरगणां तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेति यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रि महन्मखार्थी आर्योनुजस्तव गजा युतसत्त्ववीर्य तेनारित प्रमथना थमखाय भूपायन्मोचिता तद नयन् बलिमध्वरेति पत्न्यास्तवाधि मखं क्लिप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारु कवरं कितवै सभायां स्पृष्टं विकीर्य पदयो पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहें हते स विमुक्तकेशा यो नो जुगुपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद दुर्वाससु निरचितां दयुतग्रभुक्य शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घ यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापित स गिरिजो स्त्रन्मदान् निजम्ने अन्योऽपि
अन्येऽपि चाह ममुनैव कलेवरेण प्राप्तु महेन्द्र भवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतु भुजदण्डयुग्मं दण्डीवलक्षणं मराति वधाय दिवासेन्द्राश्रिता यदनुं भावितमाज मीढतेनाह मध्यमुषित पुरुषेण भुम्ना यद्बान्धव कुरुबलाब्धिमनन्तपार मे कुरथेन ततरे मतार्यसत्वं प्रत्याहृदं बहुजनधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यो भीष्मकर्ण गुरुशल्य चमोस्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चरो मम विभु रथयूथपानामायुर्नमांसि च दृशा स ऊजार्छद यद्दुःसुमा प्रणीतं गुरुभीष्मकर्णनप्त्रेत्रि सलसैन्धवबाल्हि खाद्यैस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नृहरिदासमुभामि वासुराणि सौत्यैवृताकुमतिनाथमद ईश्वरो मे यत्पादमपद्यमभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवाह मरयोरथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ता नरमाण्यो दार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेवहृदे स्पृशानि स्मरतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवानि देवी प्रलब्ध सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सिहि महान्मयि तया कुमतिरघम्ये सुहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदहृदयेन शून्य अध्वन्यो रुक्रमं परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरवलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वेधनुस्तैषव सरथो हयास्ति सुहं रथि नृपतयो यतानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभू दशदिशरीरं भस्मन् हुतां कुहकराद् मिभोक्तमोस्यां राजांस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतामुष्टभिर्मिथा वारुणीं मदिरां पीत्वा मधुन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतु पाञ्चवभीषिता प्राये तत् भगवता ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वन् महान्तोदन्त्यणीयज दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तु बलिनो मिथः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभोः यदुभिरन्योन्यं भोभारान् संजहारः दिशकालार्थयुक्तानि रिक्तापूपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सुतोवाच एवं चिन्तयतु जिष्णु कृष्णपादसरोरुहम् सूर्यार्देनातिगाढेन शान्तासिद्विमलामति वासुदेवाङ्घ्रयानुद्यानपरिबृंहितरंहसा भक्त्या निर्मथितासे स कषायधीषणोऽर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यति तत् सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धं पुनरद्य विभो विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या संच्छिन्नद्वैतसंशय लीना प्रकृतैर्गुण्यादलिङ्गत्वादसम्भव निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां यदुकुलस्य
स्वपन्थाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर प्रीथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं सताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधूक्षजे निवेशितात्मो पररामसंसृते यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावज कण्टकं कण्टके निवद्वयं चापि सुतसमं यथा मत्स्यादिरूपाणि दत्ते जह्यात् यथा नटभुभार च पितु तेन जहौ तच्च कलिवरं यदा मुकुन्दो भगवानिमां मयीं जहौ स्वतन्वा श्रवणे यसत् कथा तदाहं रेवा प्रतिबुद्धचेतसा मधुर्महेतु कलिरन्वर्तत युधिष्ठिरस्तद् परिसर्पणं बुधा पुरे च पुराष्ट्रे च गृहे यथात्मनि विभाव्य लोकान् नृपजिंहजिंसनाय धर्मचक्रं गमनाय पर्यहादात् स्वराट्पुत्रं विनयीनमात्मनः सुसमं गुणे तोयनिव्यापतिं भूमेरव्यसिञ्चद् गजा वै मथुरायां तदा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्रजापत्यं निरूप्येष्टिमग्निना पिबदीश्वर विसृज्य तत्र तत् सर्वं दुकूलबलयादिकं निर्ममो निरहङ्कार संच्छिन्ना शेषबन्धन वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्युवपानं सुत्सर्गं तं पञ्चत्वे यजुहवेत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहुन्मुनि सर्वमात्मान्यजुहवेद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये चिरवास निहराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनोरूपं जडोन्मत्तः पिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगाद् शृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं अनपेक्षमाणो निरगाद् शृण्वान् बन्धिरो यथा उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिहृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तित यतो गतः सर्वे तमनो निर्जग्मुर्भ्रातर कृतनिश्चया कलेना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टा प्रजा भुवे ते साधु कृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मना मनसा धारयामासु वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधीषणा परि तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दूरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्याज्य प्रवासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चेत्त पितृभिर्स्वक्षयं ययो द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनामानपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तमतिराप तं यश्रद्धये तद् भगवद्प्रियाणां पाण्डुसुतानामिति सम्प्रयाणां शृणुत्यलं स्वस्थयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम पञ्चदशोत्सवः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।